कैलोरीमेट्री का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं बेटा। कैलोरीमेट्री, इसमें देखो बेटा, जो फर्स्ट फॉर्मूला अपने को याद रखना है, दैट इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, जिसे हम कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बेटा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज रेशियो ऑफ योर W डिवाइडेड बाय Q, और इसका यूनिट होता है कैलोरी, isn't it? तो 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू योर, कितना लिखोगे बेटा? 4.2 जॉल्स फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। ठीक है, सो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज हाउ मच बेटा? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज W इज इक्वल्स टू योर J इनटू Q। लिखो W is equals to J into Q। इसका मतलब क्या? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट प्रोड्यूस्ड। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल रहे हैं, तो वी आर गेटिंग सम कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज ऑफ योर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ योर हीट पार्ट। ठीक है ना? चलो, स्पेसिफिक हीट जो है ना, वो एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। इफ CRS is the specific heat, कैपिटल C मतलब मोलार स्पेसिफिक हीट बेटा, स्मॉल c है, दिस वन इज स्मॉल c, और स्मॉल s is the specific heat of what? Substance, specific heat of your substance। then Q कैसे लिखेंगे? Q is equals to your M into S into your delta T लिखेंगे, और हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, Q is equals to your M into C into delta T, जैसा आपकी मर्जी है। ठीक है ना? अगर C लिखे S लिखे तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटल C लिखे तो मोलार स्पेसिफिक हीट होता है बेटा, स्मॉल c लिखे तो स्पेसिफिक हीट ही लेना अपने। Q is equals to your M into your C into delta T और S into your delta T। अगर C और S मान के चलो, फंक्शन में दे रखा है एज ए टेम्परेचर, देन इफ CRS is function of temperature, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अपने को तो इंटीग्रेशन आता है, तो अब थोड़ा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा के सिंप्लीफाई कर लेना। Q is equals to your integral of your M into C into your delta T, that is nothing but dt। लिमिट्स विल बी इक्वल टू योर हाउ मच बेटा? फ्रॉम टेम्परेचर T1 से लेके T2 तक। C से लिखो और S से लिखो, इट इज 1/सेम। R मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, Q is equals to your M into your integral of your S into your dt। लिमिट्स विल बी इक्वल टू योर T1 से लेके T2 तक, जैसा आपकी मर्जी है वैसा आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद और एक टर्म याद रखना है कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट के अंदर, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ योर गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, वैसे भी आप लोगों को केमिस्ट्री में भी अच्छी तरह से याद हो रहा, फिर भी मैं एक बार फास्ट रिवीजन कर देता हूँ। अगर CV स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस कांस्टेंट वॉल्यूम है बेटा, तो QV विल बी इक्वल टू योर N into CV into your delta T लिखेंगे। ठीक है बेटा, अगर CP में लिख रहे हो बेसिकली, देन QP विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी बेटा? QP विल बी इक्वल टू योर N into your CP into your delta T। ठीक है, CV is what? Specific heat of a gas at constant volume। CP is your specific heat of your gas at your constant pressure। और इन दोनों का रिलेशन आप लोगों को मालूम है, मेयर्स रिलेशन, याद है ना? मेयर्स रिलेशन क्या होता है बेटा? CP माइनस ऑफ CV इज इक्वल्स टू योर कैपिटल R। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू हाउ मच बेटा? कैपिटल R। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन हो, याद रखना है। QVP इज इक्वल्स टू N into CP into dt, और QV इज इक्वल्स टू N into your CV into dt। What is the CV बेटा? CV is your specific heat of gas at constant volume। ठीक है ना? उसी तरह से CP is equals to your specific heat of gas at constant pressure, at your constant pressure। CP minus CV is known as of your Maer's relation, और मेयर्स फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप, उसमें कोई बात नहीं है। So Q is equals to N into CV dt, or Q is equals to your N into CP into dt। N is your number of moles, delta T is your temperature, capital T is your universal gas constant। क्लियर है? और CP और CV के रिलेशन कैसे निकालते हैं बेटा, याद है आप लोगों को?
CV is equals to your R divided by gamma minus 1. Molar specific heat, अगर number of degrees of freedom दे दिया, then CV is equals to R by gamma minus 1, and CP will be equal to how much better? CP will be equal to your gamma into R divided by gamma minus 1. CP is equals to your gamma into R divided by gamma minus of your 1. ये हो गया इसका एक relation. ठीक है ना? अब आते हैं next one, an important term, latent heat. लेटेंट मतलब हिडन, जो एनर्जी हिडन होती है ना उसको हम लोग लेटेंट बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है ना. सो लेटेंट एनर्जी निकालने का तरीका Q इज इक्वल्स टू योर M इनटू योर लेटेंट हीट L. L इज नोन एज लेटेंट हीट बेटा, इजंट Q इज इक्वल्स टू योर M इनटू योर L, यानी L इज इक्वल्स टू योर Q डिवाइडेड बाय योर M. L इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय योर M, ठीक है ना. यूनिट क्या हो जाएगी? कैलोरी पर केजी, कैलोरी पर ग्राम, सॉरी. अगर आप जॉल्स में ले रहे हो तो किलो जॉल्स भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो Q इज इक्वल टू योर M इनटू योर L. लेटेंट हीट ऑफ योर फ्यूजन ऑफ आइस, L ऑफ योर आइस कितना होता है बेटा? 80 कैलोरी पर ग्राम. R दिस विल बी इक्वल टू योर 336 किलो जॉल पर केजी, ठीक है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर यानी स्टीम, L ऑफ योर स्टीम कितना होता है बेटा? स्टीम के लिए होता है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है. R अगर केजीज में लिख रहे हैं तो 2259 किलो जॉल पर योर केजी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना. सो अब इसके अंदर और एक इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, दैट इज नोन एज ऑफ योर लॉ ऑफ योर मिक्सचर्स, लॉ ऑफ योर मिक्सचर्स, जो कैलोरीमेट्री पे फेमसली प्रॉब्लम्स बनते हैं. ये लॉ आप लोग को तो मालूम है. व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ योर मिक्सचर्स बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ योर मिक्सचर्स? heat lost by one body, heat lost by one body must be equal to your heat gained by the another body, heat gained by your another body. Heat lost is equals to your heat gain, heat lost must be equal to your heat gain, heat lost must be equal to your heat gain. यानी hotter body will lose heat and colder body will get the energy, that's it. ठीक है ना? चलो थोड़े शॉर्टकट्स देख लेते हैं जल्दी से स्पेस में, जो हर वक्त अपने को याद रहना बेटा फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स. नंबर 1, say for example I got two liquids of masses M1 and M2 बेटा, ओके, एंड स्पेसिफिक उसके मालूम कर लीजिए C1 and C2 है. अगर दोनों मिक्स करें देन स्पेसिफिक हीट ऑफ द मिक्सचर विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक हीट ऑफ योर मिक्सचर, specific heat of your mixture. So I am writing that one as of your C, that is equals to your M1 C1 plus of your M2 C2 divided by your M1 plus of your M2. C is your specific heat beta. Okay, so specific heat of the mixture is represented by letter C. So two liquids of masses M1 and M2, C1 and C2 are what is specific heats? C1 and C2 are what beta? Specific heats. Okay, so when both of them are mixed, when both of them are mixed, so specific heat of the mixture is represented by this form. और इससे भी लिख सकते हो आप M1 S1 plus M2 S2 divided by M1 plus M2, कोई प्रॉब्लम नहीं. सर मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फेजेस के प्रॉब्लम्स कराइए ना. बीफर्ट कंफ्यूजन हो रहा उसमें, क्या बीफर्ट बेटा? शहनाज बी लिटिल बिट क्लियर. अभी तो स्टार्ट किया, प्रॉब्लम्स कराने के लिए टाइम तो लगेगा ना. रिवीजन प्रॉब्लम्स फॉर्मुलेस वगैरह तो रिवीजन कराना ही पड़ेगा. ज्यादा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उसमें. जो मैंने लास्ट टाइम नोट्स पढ़ाई थी वो एक बार निकाल के एक बार पढ़िए आप. बेसिक क्वेश्चन ही है बेसिकली, जो नोट्स में मैंने करवाया था उसको एक बार निकाल के पढ़िए. जो प्रॉब्लम्स करवाया था क्लास में उसको एक बार करिए. वैसे भी मैं थोड़ा यहाँ पर अभी करवा दे रहा हूँ. बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब लास्ट टाइम आप क्लासेस नहीं सुने इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है. ही एक फॉर्मूला, एक फॉर्मूले को आप अप्लाई नहीं कर सक रहे हैं, मतलब कंफ्यूजन किस में हो रहा है? चेंज करने कंडीशन में. जर्नी ऑफ आइस मतलब बहुत क्लास में लिखवाया था बेसिकली. क्लास नोट्स निकाल के एक बार पढ़ो, आपको आराम से आ जाता. ठीक है, चलो. अगर when two substances of masses M1 and M2, specific heats S1 and S2 are mixed, और उन लोगों के टेम्परेचर्स भी है बेटा T1 T2,
then temperature of the mixture will be equal to your how much? Next one is temperature of mixture. ठीक है, temperature of a mixture मतलब capital T. Capital T is equals to your M1 C1 T1 plus of your M2 C2 T2 divided by ये हो जाएगा मेरे पास M1 C1 plus of your M2 into your C2. So T is equals to your M1 C1 T1 plus of your M2 C2 T2 divided by M1 C1 plus of your M2 into your C2. ठीक है, तो क्लास होने के बाद मेरे को क्लास में मिलो बेटा, मैं एक बार समझा देता हूँ। वैसे भी इसकी भी रिकॉर्डिंग है, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, समझ में आ जाता। ठीक है, सो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर अगर पूछ रहा है तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर के लिए फॉर्मूला है और स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर के लिए फॉर्मूला है बेसिकली। ठीक है ना, और देखिए बेटा, whenever equal amount of ice and steam at 100 degree centigrade are taken together, then final temperature of them will always remain at 100 degree centigrade only. ठीक है ना, अगर 1 gram of ice at 0 degree centigrade is taken together with 1 gram of water which is lesser than or equal to 80 degree centigrade, then final temperature will become for me always 0 degree centigrade. ये बातें आप लोग दिमाग में याद रख के रखिए। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। जर्नी ऑफ योर आइस, मान के चलिए, तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। -10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ योर आइस है मेरे पास। ठीक है ना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ योर आइस, ठीक है ना, ये माइनस है, will get convert into 10 degree centigrade of your ice. -10 degree centigrade will convert into what beta? -10 degree centigrade of your ice will convert into your 0 degree centigrade of your ice. 0 degree centigrade of your ice. Then this 0 degree centigrade of ice will convert into your 0 degree centigrade of your water. Then 0 degree centigrade of water will get convert into your 100 degree centigrade of your water. 100 degree centigrade of this water will convert into your 100 degree centigrade of your steam. ठीक है ना, सो ये हो जाएगा कंडीशन। और जहां जहां पर भी चेंज हो रहा है बेटा स्टेट, वहां पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर देखो आइस टू आइस है, तो यहाँ पर Q1 इज इक्वल्स टू M इंटू एल ऑफ योर आइस लेंथ। चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा, आइस टू आइस है, तो हम लोग टेम्परेचर अपने को कहाँ पर है बेटा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ योर वाटर टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ योर वाटर है। तो व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन स्टेट पार्टिकुलेशन, तो टेम्परेचर डिफरेंस दिखाई दे रहा है बेटा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, तो MS इंटू योर डेल्टा T ले लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। सो Q1 इज इक्वल्स टू योर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 is equals to your M into S into your delta T। उसके बाद Q2 देखो बेटा, यहाँ पर Q2 will be equal to, यहाँ पर ice है, यहाँ पर water है, so when there is a change in the state और temperature अपना same है, तो this will become for me M into L of your ice। then water to water temperature difference है, then Q3 will be equal to your M into S into your temperature difference। then 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेम है लेकिन चेंज ऑफ स्टेट है, तो ये हो जाएगा Q4 इज इक्वल टू M इंटू एल ऑफ योर स्टीम। ठीक है ना, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? कीप दिस पॉइंट इन माइंड बेटा, when equal amount of ice and steam at 100 degree centigrade are taken together, the final temperature of them remains 100 degree centigrade। ये बात याद रखिए बेटा, when equal amount of your ice and steam at 100 degree centigrades are taken together,
the final temperature of them will remain for me how much? 100 degrees centigrade. ठीक है ना? चलो और एक पॉइंट लिख लीजिए इसका. when 1 gram of ice at 0 degree centigrade is taken. ठीक है? Is taken together with 1 gram of water. जिसका टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर इज T is lesser than or equal to your 80 degree centigrade. So the final temperature becomes 0 degree centigrade. ठीक है? क्या बोल रहा हूं यहाँ पर? When 1 gram of ice at 0 degree centigrade is taken together with 1 gram of your water, T is lesser than 80 degree centigrade. तो जो फाइनल टेम्परेचर होता है ना, द फाइनल टेम्परेचर बिकम्स हाउ मच फॉर योर 0 डिग्री सेंटीग्रेड. बात क्लियर है सभी को? ठीक है ना? चलो एक प्रॉब्लम करवा देता हूं, आप लोग को विल गेट एन आइडिया. फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए. 6 grams of steam at 100 degree centigrade is mixed with 6 grams of ice at 0 degree centigrade. Find the mass of steam left uncondensed. ये क्वेश्चन है मेरे पास. ठीक है ना? इसका शॉर्टकट देखो बेटा, अपन क्या यूज कर रहे हैं? हीट लॉस्ट must be equal to your heat gain. Heat loss must be equal to your heat gain. Heat loss is by home steam, यानी m into latent heat of steam is 540 is equals to. So 6 gram of ice at 0 degree centigrade. So ice at 0 degree centigrade will first convert into your water at 0 degree centigrade. Then water at 0 degree centigrade. ठीक है ना? तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर सेम है, आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? m into L ऑफ आइस लेंगे. ठीक है ना? तो यहाँ पर मास ऑफ आइस कितना है? 6. लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है? 80. ठीक है ना? तो व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? 100 degree centigrade is mixed with 6 grams of your what do you call that one? Ice at 0 degree centigrade. So ice now will go from 0 degree centigrade. This water will go to your water at your 100 degree centigrade. तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ms into delta T. कितना मास बेटा? 6. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1. टेम्परेचर डिफरेंस इज योर T2 minus T1. T2 is 100, T1 is 0. ठीक है ना? तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? m into your 540 is equals to 680 plus of your 6 into your 100. देखो कितना आ रहा है, जल्दी से बता दो. Anyone? 6 8s are 48 plus 6 into 1 is 6. This one is your 600. ठीक है ना? तो कितना हो गया बेटा? 1080. So mass will be equal to your 1080 divided by 540. ये वाला चलेगा, तो is 108 divided by 54. कितना आ रहा बेटा? 2 grams. So mass of the steam will be equal to how much बेटा for me? 2 grams. ठीक है ना? पूछ रहा क्या? Mass of the steam left uncondensed. Therefore mass of steam left uncondensed यानी नहीं मेल्ट हुआ. So that will be 6 में से 2 निकाल दो, that will be equal to your 4 grams. So that will be the answer. ठीक है? क्लियर है? वेरी गुड. आ गया सभी को? चलो और एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए.
See this one. A tap water at 10 degrees centigrade and another tap at 100 degrees centigrade, 100 degrees centigrade. How hot water, or I can say how much of hot water, how much of hot water must be taken so that we get 20 kg of water at 35 degrees centigrade. चलो करके बताइए. A tap water at 10 degrees centigrade and another tap water at your 100 degrees centigrade. So how much of hot water must be taken so that we get 20 kgs of water at your 35 degrees centigrade? Very good. मान के चलो if m kg of hot water is taken, ठीक है ना? Then I can say that 20 minus of your m into specific heat of water is 1 into temperature कितना है बेटा 35 है माइनस ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना? वाटर टैप वाटर के पास, so that is equals to your another tap water मतलब कितना मास है into specific heat of water is 1 into ये हो गया 100 minus of 35, ठीक है ना? So ये कितना बन जाएगा 20 minus of your m into 35 minus 10 is nothing but 25 is equals to your m into this will be equal to how much for me 65, ठीक है ना? इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल गेट द वैल्यू ऑफ योर m. m की वैल्यू कितनी आ रही? m is equals to 50 divided by 9 kg. आ गया सभी को? Very good. 50 by 9. I hope everyone got it. ठीक है ना? चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसे. आप लोग ट्राई करिए. The amount of steam at 100 degrees centigrade that should be passed into 600 gram of water at 10 degrees centigrade to make the final temperature as 40 degrees centigrade will be how much? First option is 40 grams. Second option is 30 grams. Third option is 20 grams. Fourth option is 45 grams. चलो करके बताइए. The amount of steam at 100 degrees centigrade that should be passed into 600 gram of water at 10 degrees centigrade to make the final temperature as 40 degrees centigrade. Steam convert हो रहा है, ठीक है ना? So I can write here heat lost by heat gain. Mass of your steam into latent heat of your steam plus mass of your steam into specific heat of water is 1 into 100 degrees centigrade final temperature to your 40 degrees centigrade some common temperature. That must be equal to your mass of your water into specific heat of your water
into your 40 say 10 degree centigrade minus of your 10 degree centigrade. ठीक है ना? So specific heat of water is how much beta? 1, isn't it? So this is your mass of your steam into latent heat of steam is how much beta? 540 plus mass of your steam into 1 into 100 minus 40 is how much beta? 60 is equals to mass of water कितना दे रखा है प्रॉब्लम में? 600 grams into specific heat of water कितना बेटा? 1. 40 minus 10 is nothing but equal to your 30. आ गया सभी को? कितना बन रहा है देखिए mass of steam? 30 grams. Very good. So mass of your steam will be equal to your 30 grams. आ गया सभी को? This one is 540 into mass of your steam plus of your 60 into your mass of your steam is equals to your 600 into your 30. ठीक है ना? तो मास ऑफ स्टीम कितना हुआ बेटा? मास ऑफ स्टीम आप कॉमन ले लीजिए 540 प्लस 60 कितना हो जाएगा कोई बताएगा? वेरी गुड 600 दैट इज इक्वल्स टू योर इफ कॉमन है ना बेटा 1800 मेरा पेन स्टक हो रहा बेटा 2 zeros and 2 zeros चले गया सो मास ऑफ स्टीम इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा बेटा? क्या गलत किया मैंने? 540 प्लस ऑफ योर 60 दिस विल बी इक्वल टू योर 600 यहाँ पर और एक जीरो आएगा ना तो 180 होगा यहाँ पर सॉरी यानी ये हो जाएगा 30 ग्राम्स हाँ ठीक है ना? आ गया सभी को करना कैलोरीमेट्री के प्रॉब्लम बस यही ऐसे होते हैं बेसिकली इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ठीक है any doubt to anyone चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आप लोग करके बताइए एक बार 1 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 1 gram of steam at 100 degree centigrade. The mass of water formed. The mass of your water formed is dash. Options given are 4 by 3 grams. Second option is 2 by 3 grams. Third option is 5 by 3 grams. And fourth option is 1 gram. चलो करके बताइए 1 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 1 gram of the steam at your 100 degree centigrade. The mass of water formed will be equal to your how much? पहले क्या करिए the amount of steam condensed to raise the temperature of ice by 100 degree centigrade after melting कितना होता है ये निकालिए आप लोग. So I'll do water in this. The amount of steam which is condensed to raise then struck for our statement. The amount of steam condensed to raise the temperature
of your ice by how much? 100 degree centigrade after melting. यानी पूरे आइस को मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ स्टीम के पास लेके जा रहा हूँ. तो मुझे नहीं मालूम कितना मास हो रहा है, तो m इंटू 540 लिख लिया मैंने. मास ऑफ स्टीम इज m ग्राम्स इंटू 540 मस्ट बी इक्वल टू योर मास ऑफ आइस. कितना है मेरे पास? 1 ग्राम ऑफ आइस इंटू दिस विल बी इक्वल टू योर 80 प्लस वो आइस से वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, तो 1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस इज 100 माइनस ऑफ 0. तो दिस विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी? 180 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये हो गया 540 इंटू योर m इज इक्वल्स टू योर 180. ये वाला चले गया, तो मास विल बी इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 54. सो दैट विल बी इक्वल टू योर 1/3 grams. दिस इज द स्टीम. तो वाटर कितना होगा? सो वाटर विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? सो वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम तो मेरे पास ऑलरेडी है. अभी आइस की स्टीम कितना है? 1/3, यानी पूरा कितना हो गया? 4/3 grams विल बी द आंसर. सिंपल स्टेप. क्लियर है सभी को? वेरी गुड. 4/3 और 1.33. क्लियर है बेटा? चलो next one. Latent heat of ice, latent heat of your ice is 80 calorie per gram. Okay. A man melts 60 gram of ice by sieving in 1 minute. His power is so power पूछा है तो obviously यूनिट कितने में किस में रहेगा बेटा? वॉट में रहेगा. तो वर्क डन बाय योर मैन मस्ट बी इक्वल टू हीट ऑब्जर्व्ड बाय द आइस. उतना ही ना बेटा? वर्क डन बाय योर मैन must be equal to your heat observed by your eyes. वो कितना हो जाएगा? That is m into L of your ice. कितना है मास? 80. Latent heat of ice कितना है? 80. मास कितना है? 60. 6 8 48. तो ये हो गया 4800 calories. Yeah, that will be equal to your how much? 20160 joules. Okay. और निकालो. So work done is equals to heat observed आ गया अपने को. So now I can calculate the value of your स्टक हो रहा है यार. Okay. So power is equals to Q divided by T. T is time your seconds beta. Or else I can even write this one as of your work divided by your time. So work done will be equal to how much? 20160 divided by 60. A zero chalega. So that is a 336 watt of oxygen. Very good.
क्लियर है? या आज का एग्जाम कैसा लिखे बेटा आप लोग का? नो रिस्पॉन्स. How was today's exam? ओके चलो देन, टेक केयर बेटा, बाय. बाकी स्पेलिंग बोलो. डॉक्टर पैरेट ये कौन लिखे हैं? हाँ क्या ये कौन है? हाँ जाके दीदी को मार के आ जाओ, क्या के लिए पूछो जाए. हाँ हाँ पर्पल की स्पेलिंग बोलो. पर्पल में पर्पल की स्पेलिंग. ग्रीन ब्लैक येलो ब्लू स्पैरो स्पैरो बोला. हाँ स्पा हाँ क्या करूँ गंगी जी के बराबर है. उसके साथ के क्लास में चले बैठ जाता है, हस्ती ला लेगा उसके साथ बैठता. क्या स्पेलिंग नहीं आ रहा, स्पैरो का स्पेलिंग नहीं आ रहा, बच्चे को आता, उसके साथ बैठ जा तो भी अक्ल से. पर्पल का स्पेलिंग बोल में. एलकेजी का भी नहीं आ रहा. स्पैरो एलकेजी का नहीं आ रहा बोलेंगे. कपड़े निकाल के बाहर भी जा जाओ. ठीक है